students. Today we start with management of another resource. As you know that in previous lectures we discussed three resources. One was the energy resource, management of energy resource, time management, and money management. Now the last resource, availability of resource and its management, is the space management. Dear students, I hope you understood all three resources and how can we manage these resources in order to utilize them properly, and we achieve our goals and needs as per the availability of these resources. Now dear students, next availability of resource is the space management. Dear students, space organization means assigning space to an activity and systematically arranging all the materials required for it. That is space management. ठीक है, जो भी आपको अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है, जितनी स्पेस आपको दी गई है किसी का वर्क को करने के लिए या किसी एक्टिविटी को करने के लिए, उसको आप ऐसे अरेंज करते हैं सिस्टमैटिकली सो दैट हर एक एक्टिविटी उस लिमिटेड स्पेस में हो जाए, और जो भी आपका मटेरियल है वो वहीं पे आप स्टोर कर सके. सो इट मीन्स आपको ऐसे स्पेस को मैनेज करना है. एक तो आपका जो मकसद है, गोल है, वो आपका फुलफिल हो जाए, और आपका जो मटेरियल वो भी आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे इन दैट लिमिटेड स्पेस. दैट इज स्पेस management. Space organizations or allotting space for the activity making available. It is desirable that all the material is required for performing a specific task or stored nearby, so that you don't waste your time and energy in collecting the material and storing it back. Such an arrangement for storage is termed as functional storage. As you know that there are lots of material or lots of stock in the stock. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी केटरिंग यूनिट की बात करेंगे या आप अपने घर की बात कीजिए. घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इन एडवांस में ला के रखते हैं. ठीक है, सो उसको हम स्टोर कहाँ पे करते हैं? अपने स्टोर रूम में. सो हमें उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे स्टोर करना है, सो दैट इट बिकम इजी फॉर अस टू एसेस. ठीक है, हमारे लिए इजी होना चाहिए कि उसको हम एसेस कर सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. ऐसे हमें उसको स्टोर करना है ताकि हमारी टाइम और एनर्जी सेव हो जाए. ठीक है. If two or more activities needed to be performed nearby, then their working area can also be organized. For example, अगर आपको दो activities एक ही टाइम करना है और एक ही जगह पे, तो आपको ऐसे उसको simultaneously अरेंज करना है, परफॉर्म करना है, बिकॉज जो स्पेस है वो लिमिटेड है. ठीक है, सो आपको उस स्पेस को ऐसे मैनेज करना है सो दैट आप हर दो एक्टिविटीज या दो से ज्यादा एक्टिविटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, अच्छे से उस एक्टिविटीज को आप कर सके एंड अपना गोल जो है उसको आप अचीव कर सके. सो इट मीन्स यू हैव टू मैनेज योर स्पेस इन सच अ वे दैट यू कैन अचीव योर टू और मोर एक्टिविटीज in a given period of time. ठीक है, for example, as you know that in a house you have a specified rooms like dining room, drawing room, bedroom. ठीक है, और एट किचन एंड स्टोव. ठीक है, ये हमारे पास कुछ लिमिटेड स्पेस एरिया है. अगर हमें कभी गेस्ट इतने ज़्यादा आएंगे, हमें जगह कम पड़ जाती है. सो आपको घर को ऐसे बनाना है, इन रूम्स को ऐसे आपको अरेंज करना है सो दैट आप फिर बेडरूम को भी एज ए गेस्ट रूम बना सकते हैं. ठीक है, इज इट? सो दैट इज स्पेस मैनेजमेंट. ठीक है, सो दैट आप कभी कभार हमें दो या तीन एक्टिविटीज एट अ टाइम आ जाती है. सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूटिलाइज your space, limited space, in such a way in order to achieve your goal. Space management for family activities like cooking area. Study the kitchen in your house and judge for yourself whether the arrangements made are satisfactory or do they need some change. ठीक है, अगर हम स्पेस मैनेजमेंट की बात करेंगे इन कुकिंग एरिया, तो आपको अपने कुकिंग एरिया को डीप में स्टडी करना है एंड एनालाइज करना है whether they need some change or
they are satisfactory. All the things are arranged in your cooking area in a satisfactory way. In the kitchen, you need to store equipment and things on basis of their need. Depending on the space available, layout of kitchen can be selected. So जब हम किचन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें स्टोर एरिया किचन के साथ ही अटैच रखना है या आउटसाइड द किचन रखना है. सो आप वैसे ही किचन को लेआउट बनाते हैं, वैसे ही आप किचन को अरेंज करते हैं. सी there are four types of kitchen: one walled kitchen, two walled kitchen, U-shaped kitchen and L-shaped kitchen. One walled kitchen means for small houses, such a kitchen is provided where all the arrangements for preparing, cooking, storing and washing are made on the wall only. ठीक है, जो वन वॉलड किचन होता है, ये छोटे से घर को हम ऐसा किचन बनाते हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज है जैसे कुकिंग है, वॉशिंग है, स्टोरिंग है, preparing है and storing each and everything in the kitchen, they have to do all these activities in the one walled kitchen. Two walled kitchen, here two walls facing each other are used for the kitchen arrangement. U shaped क्या होते हैं, इसमें three adjoining walls are used for kitchen arrangement. And L shaped में आ जाता है two adjacent walls are used for kitchen arrangement. ठीक है, आई होप यू अंडर. एल शेप्ड किचन किसको हम कहते हैं, जहाँ पे टू एडजेसेंट वॉल्स को ज्वाइन किया है. ठीक है, यू शेप्ड में जिसमें थ्री एडजॉइनिंग वॉल्स को ज्वाइन किया है, एंड टू वॉल्ड किचन जिसमें दो अपोजिट में वॉल्स होंगे. सो ऐसे किचन को अरेंज किया और वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटीज है, इधर वॉशिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्मड अंडर दिस एरिया. ठीक है, नाउ बाथिंग एरिया. Washing of clothes and bathing are usually done in the bathroom, isn't? Therefore, bathroom should be needed such a storage area, especially for soaps, washing powder, oil, other toiletries and bath linen. Because ये सारी चीज़ों के लिए आपको बाथरूम में जगह की ज़रूरत है. It needs to have proper water supply, drainage facility. Floor of the bathroom must have a slope leading to the main drainage point. Care should be taken to all locate all electric points in a manner that they are away from water source to prevent any accident. Because अगर आप जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है वो आप थोड़ा नीचे ही रखेंगे तो पानी आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है. सो ऐसे आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बाथरूम में अरेंज करने हैं so that electric shocks आप prevent कर सके. If washing machine is used for washing clothes, then there should be provision for keeping it in the bathroom or in an area specially assigned for washing clothes. Adequate arrangement must be made there to store soiled clothes so that you don't have to collect them from every nook and corner of your house. ठीक है, तो आपको वॉशरूम में जगह भी रखनी चाहिए जहाँ पे हम डर्टी क्लोथ्स को स्टोर रख सकेंगे, सो दैट हमें जब हम वॉशिंग करेंगे क्लोथ्स तो हमें ऐसा ना होना चाहिए कि हमें उसी टाइम कपड़ों को जो जो हमें वॉश करने होंगे उनको ढूंढना पड़ेगा. The area for drying the clothes, that is the clothes line, should be near the washing area so that unnecessary movement between washing and drying area is avoided. ठीक है, so आपको ऐसे जब आप घर बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर होता है उसको ये सारे के स्टेप्स माइंड में रखता है, बिकॉज उसको देखना है मुझे बाथरूम को ऐसी जगह पे लोकेट करना है सो दैट मैं ड्राइंग एरिया भी वहीं पे रखूँ, सो दैट टाइम और एनर्जी बच जाए. ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आपको बहुत सारे मूवमेंट्स वहां से यहाँ करना होगा, वॉशिंग एरिया से ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया से वॉशिंग एरिया. सो इट इज बेटर दे शुड बी नियर. ठीक है, ये बहुत नज़दीक होना चाहिए सो दैट एनर्जी एंड टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल सेव हो जाए. ठीक है, sleeping area. Sleeping area is usually allocated in the bedroom. Sorry. The bedroom is meant for resting, sleeping and dressing. In addition, it can be used for study purpose. Proper arrangement of study table, light and space for storing books will have to be made for it. If bedroom is small, then the beds can be so made that children's beds can be under the big bed and pulled out whenever required. Also, bunk beds and folding berths can be used अगर bedroom small होंगे. Preference should be given to beds that can have with boxes or drawers which can be used for storage in place of cupboard or अगर bedroom छोटा होगा
सो आपको वहाँ पे कबर्ड या शेल्फ की नीड है ही नहीं। सो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसे बेड बेड को परचेज कर सकते हैं जिसमें साइड्स में ड्रॉवर्स होंगे जिसमें आप कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। साइड tables can be used on either side of the bed for keeping small items required like table lamp, watch, books, water. Instead of a dressing table, a mirror can be fixed on the wall to save space. ड्रेसिंग टेबल भी आपको जगह ले सकते हैं, अगर आपको जगह बचानी है तो आप फिक्स्ड मिरर को आप दीवार पे चिपका सकते हैं। Wall space can be used for storing books and other stationery items. The almirah or wardrobe can be built in the wall and up to the ceiling level. Its ceiling area is to be provided in the living room itself, as in the case of one-room apartment. Then a divan and folding beds can be provided for sleeping. जहाँ पे separate bedroom नहीं होगा, वहाँ पे इंसान को क्या करना चाहिए, जो लिविंग रूम है फिर वो वहीं पे सो जाते हैं। सो लिविंग रूम में क्या करना चाहिए, वहाँ पे दीवान सिस्टम और फोल्डिंग बेड प्रेफर आप कर सके, सो दैट जो फोल्डिंग बेड है वो शाम को आप एज अ बेड यूज कर सकते हो और दिन में आप दीवान सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Now the next is study area. The study table should be placed where there is a provision for good natural and artificial lighting with least disturbance. ठीक है, because lighting is very important when we talk about the study. It can be in the bedroom as discussed earlier, and it can be clubbed with dining room using the dining table for writing. A bookshelf or cabinet can be accommodated on or along the wall to keep books and stationery. Entertainment और recreation area भी होना चाहिए, because entertainment area is where all the members of the family get together like chat, watching TV or do any similar work. So entertainment area हमेशा बड़ा होना चाहिए जहाँ पे सारे members आ सके। Formal entertainment अगर होगा, it should be in the drawing room. If this room is large enough, it should be divided into two parts, one for sitting purpose, where sofa set, chair, tables can be arranged, and the other for dining. ठीक है, the divider between the two areas can have shelves which can be used for displaying or storing various things. ऐसे आप space को manage कर सकते हैं। ठीक है, the living room can also be converted into guest room at night, where folding beds can be spread out as per requirement. Furniture can be so provided that the living room can be used for sleeping at night. Sofa cum bed can be used as a sofa during the day and converted into bed at night. So ये different steps है which you have to follow in order to manage the space. So by which you can manage the space, you can save the space and use the limited space for different purposes. ठीक है? Guidelines for making work centers more effective. Arrange work centers, have transparent storage containers or keep them properly labeled. Because जब आप जो एरिया जो आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, जब आप उनको प्रॉपर लेबलिंग करते हैं कि ये मैंने कब, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब है, ये इजीली रह जाता है फिर इंसान को उस लेबल को पढ़ने के लिए कि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं, या मेरे स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है। Advocate lighting and ventilation in all work centers. It is very important because ventilation and lighting is very important, especially in the cooking area, in the storing area, and in the studying area. Make all work centers easy to clean and maintain. जहाँ पे भी आपको ज़्यादा काम है, मैसी एरिया है, वो ऐसा होना चाहिए जो इजी हो जाएगा क्लीन और वॉश करने के लिए। ठीक है, जैसे वॉशरूम है, किचन है, तो इसमें फ्लोर्स या जो वॉल्स है ऐसे होने चाहिए which become easy for us to wash them. Create additional storage space under the staircase, below the window slabs and as lofts. So आपको ऐसे जो extra storage space रखनी चाहिए under the staircase, below the window slabs and as lofts, so that you can store extra material under these things. ठीक है, so this was all about the space management. I hope you understood this topic, and now you can manage your space and you can arrange the limited space for different purposes, so you can achieve all the activities, all the extra activities in a limited space, because now you know that how can you manage, how can you arrange the limited um, area for different purposes. Thank you so much for dear students for today's